हैव नोन यू फ्रॉम द डेज ऑफ कसम तेरे प्यार की, और कसम से सडनली आपने एक थोड़ा सा ब्रेक लिया था ऑब्वियसली बिकॉज यू हैड अ बेबी एंड ऑल, एंड सडनली मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते आप ही आप दिखते हो. तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ऑनेस्टली एज एन एक्टर आपको तो पता ही है लाइक हाउ मच लोगों को लगता है टेलीविजन इज़ वेरी ग्लैमराइज्ड, बट जितनी मेहनत एक टीवी आर्टिस्ट करता है आई डोंट थिंक कि कोई और इंडस्ट्री में इतनी मेहनत करनी पड़ती है. और बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं जब आप एक इन्फ्लुएंसर होते हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब कुंभ का ये पूरा ट्रेंड स्टार्ट हुआ लोग मर रहे थे, बट आप अच्छा खासा जाके कंटेंट शूट करके आए थे. सो यू वर अप्रोच्ड बाय समवन, कैसा रहा वो पूरा? Yeah, firstly I'm तो very grateful because I remember कुंभ होने से बहुत पहले somebody reached out to me and they said it's not a paid thing. I said I would just do it for free. But when television करते हो ना तो एक फिक्स्ड इनकम एक पता होता है कि यार अब तक मेरा चल रहा है तो एवरी मंथ आता है, बट कंटेंट क्रिएशन सी ऑनेस्टली अगेन वही वाली बात है, आप जो कंटेंट क्रिएटर्स ने कर लिया दे हैव मेड देयर मनी. हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, और मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता. हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूँ एक नया सेलिब्रिटी. आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिन्होंने अपनी शुरुआत तो टेलीविज़न से की, लेकिन आज वो इंस्टाग्राम पे एक जाने माने इन्फ्लुएंसर से भी जानी जाती है. और नॉट ओनली दैट, she is herself so well maintained. She is a well-known mom influencer and also a businesswoman. So welcoming on the show Pranita Pandit. Hi Pranita, welcome to 4 PM. Thank you so much Harshita. That was such a beautiful introduction which Thank you effortlessly just narrated, and I was like in awe of listening to you. Now I know why this podcast is doing so well, because you're just such a flawless host. Thank you. So सबसे पहले तो प्रणीता, I want to know कि I have known you from the days of कसम तेरे प्यार की, और कसम से सडनली आपने एक थोड़ा सा ब्रेक लिया था ऑब्वियसली बिकॉज यू हैड अ बेबी एंड ऑल, एंड सडनली मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते आप ही आप दिखते हो. तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ऑनेस्टली एज एन एक्टर आपको तो पता ही है लाइक हाउ मच लोगों को लगता है टेलीविजन इज़ वेरी ग्लैमराइज्ड, बट जितनी मेहनत एक टीवी आर्टिस्ट करता है आई डोंट थिंक कि कोई और इंडस्ट्री में इतनी मेहनत करनी पड़ती है. लाइक वर्किंग 17 hours a day and you get used to that kind of work. Suddenly इतने साल 17 years working 17 hours and suddenly you're at home having a child, बहुत overwhelming हो गया था. And transition happened very organically because I moved to Goa. My husband was we were doing a villa project there. And he said, Anisha भी बहुत छोटी है and we'll just move for 6 months. वो 6 months 1.5 years हो गया because Goa is a very slow place to construct. And there I was going completely cuckoo. एक तो postpartum होगा और सारी no work, no friends, COVID. So it was very overwhelming for me and I was not able to handle it. And then how blessed we are with good human beings around us. A very close friend of mine, she said, you have so many followers and you do this and you should create content and Goa is so beautiful. And I started doing some lives. And that's where I realized that actually I think I'm a better content creator than an actor also, because it comes very naturally to me. Like I've never studied acting. Right. So I think just that natural, just being you kind of resonated and I started enjoying it a lot more. And also सबसे अच्छी बात about content creation is that I can be at home. Right. I can work when I want to. अपने टाइम पे अपने हिसाब से चीजें कर सकते हो. Because मुझे पता है टेलीविजन एक्टर के लिए मतलब एक कुछ I have seen artists, like I'll tell you a story. Somebody's father passed away and he finished the shoot and then left. तो ये जो sacrifices है ना, ये telecast पे नहीं आती, ये हमें पता होती है. So I know that is a very demanding job and I didn't want to kind of not be there for my daughter. So that way it was like a very organic and a sensible move that I made for now. कि अब ऐसे भी till the time she's 7, school, life will happen. So these years will never come back and I'm very, very grateful to God that this content creation worked out for me and it's been doing well and I enjoy it and she enjoys it too. So
yes. या आपने एक अपना नीश क्रिएट कर लिया ना एज अ मॉम इन्फ्लुएंसर एंड इंडिविजुअलिटी तो आपकी है ही बट ऑल्सो यू हैव अ सेपरेट नीश. बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं जब आप एक इन्फ्लुएंसर होते हो क्योंकि मुझे पता है कि जब कुंभ का ये पूरा ट्रेंड स्टार्ट हुआ लोग मर रहे थे बट आप अच्छा खासा जाके कंटेंट शूट करके आए थे. सो यू वर अप्रोच्ड बाय समवन. कैसा रहा वो पूरा? Yeah, firstly, I'm very grateful because I remember Kumbh होने से बहुत पहले somebody reached out to me and they said, it's not a paid thing. I said, I would just do it for free. There are some things that is your heart. Yeah, you're and passionate and you want to do. And I was like, मेरे मन में तो था ही, but I was very scared कि मैं कैसे जाऊँगी और I wanted to take my whole family and go. And they said, नहीं, we'll do the whole arrangement and everything. And बस मेरे को तो बस उतना सुनने की ज़रूरत थी. I said yes, absolutely, and I just pounced on that opportunity. And yes, I was able to go and कितने अच्छे दर्शन हुए जिसका कोई हिसाब नहीं है. और मतलब जो मैंने वहाँ पे डिप लिया, the vibe, the energy, and I'm so blessed to this job also. Like I say, even content creation is a job. Like बहुत बार लोग सोचते हैं कि this is completely your life. I was like, no. Of course, sometimes in your stories, we do share our real lives. But for me, at least personally, there is a bifurcation. Like my Instagram is my work. So I tell my friends that my Instagram might look very fancy. That doesn't mean कि मुझे phone करके पूछो मत कि तुम कैसी हो. Because of course, that's not वो दिखाने का अलग है जो what it is like television, what used to be. हम जो acting कर रहे हैं वो हम character थोड़ी हैं. I've always played a negative character. People have hated me. But जब actually मैं तो I'm not that person ना. So correct. There is of course a real feel to your content creation जो बहुत अच्छी बात है because there are some things that you can communicate as per you. So yes, of course this was something that resonated with me. It is something that I believe in. I'm highly spiritual and I believe in a lot of these things. I enjoy talking about it, experiencing it. तो जब opportunity आई, I was like bowled over and I got a videographer to shoot that experience and I have it for life. 100% and I think once in 100 years कुछ ऐसे होता है. So obviously हमारे generation का तो वो last. Absolutely. So obviously it was very nice. मैंने देखा था reel. बात करते like I have known you from Kasam but I'm sure आपकी journey उसके पहले से भी काफ़ी. How did actually TV happen to you? अभी मैंने बोला ना आपको कि I believe in a lot in spirituality and astrology and all of these things. Like I'm that in-house astrologer of all my friends, but when I started my career with Balaji, and yes, it is true that I think one astrologer had predicted and said कि ये लड़की she will be a perfect fit, and मेरे साथ तो luck by chance हुआ. When I came to Bombay, I didn't come to Bombay to struggle. जब मेरे पास call आया था तो I was already casted. Oh, so wow. I came to Bombay with work, and at that point of time, like Ekta ma'am had given so much work, and that time was the peak of television. I started my journey with Kasauti Zindagi Ki. So you can imagine. Correct. And Kasturi, of course, was my first show which never happened for me, but Kasauti happened and I worked in that. But yeah, I came to Bombay, like it came in my life like in a platter. कहते हैं ना जो आपके नसीब में लिखा है वो कोई नहीं ले जा सकता. कर्म अपनी जगह है, but your destiny and of God course. like life plays a role. So like I see people struggling. मुझे लगता है कि इंडस्ट्री तो बहुत किस्मत पे डिपेंडेंट है, and I personally believe in it. Of course hard work तो 10,000 लोग कर रहे हैं पर काम तो एक ही को मिल रहा है. Correct. तो आपकी तकदीर में अगर है तो वो आपको खींच ही लेगा, और नहीं है तो फिर ज़मीन पे लेट जाओ, कुछ भी कर लो, वो हो ही नहीं सकता. एंड आई completely vouch for it. Like there was a time when I didn't have work and I was going mad. And I called up my astrologer. I said, यार काम क्यों नहीं हो रहा? कह रहे जुलाई तक नहीं होगा, अभी टाइम नहीं है, जुलाई तक चिल करो. I need this astrologer. Yeah, I think a lot of people do. So and I was जुलाई तक चिल करो. Then I just put it in my mind and literally मैंने जुलाई तक कुछ ही से जुलाई के बाद अपने आप हो जाएगा, चिल करो. I went for a holiday. जो मैं बड़ा पैनिक कर करके ना पागल हो रही थी कि काम sometimes we all get frustrated. overthinking से भी काम मिलने नहीं वाला है. It's unnecessarily like body खराब होती है उसमें. और कभी-कभी हम struggle करे जा रहे हैं ना, I'm working so hard and नहीं हो रहा बाबा, नहीं मिल रहा. इसे तो क्यों कर रही हो? हम like हैं. इसे नहीं, अभी टाइम नहीं है, आएगा, हो जाएगा, जुलाई तक वेट करो, अपने आप हो जाएगा.
And you won't believe, July itself I got a call for Uttaran. I remember the show also because Uttaran also there was, हमारे क्या होता है ना, जैसे normal job people have a job every day. Be it a content creator or an actor, हमको तो हर project के लिए hustle करना पड़ता है. So you're like you have a job, you don't know till when, कब खत्म हो जाए और फिर करेक्ट, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन. वो जो हसल है, वो जो एक्साइटमेंट है, वो जो स्ट्रगल है, यू नीड टू एंजॉय इट. ओनली देन कैन यू नो सस्टेन इट. अदरवाइज दैट्स नॉट नहीं हो पॉसिबल. नहीं हो पाता. पाता. यू नो, बट व्हेन टेलीविजन करते हो ना तो एक फिक्स्ड इनकम एक पता होता है कि यार अब तक मेरा चल रहा है तो एवरी मंथ आता है. बट कंटेंट क्रिएशन इज वेरी ट्रिकी क्योंकि लोगों को दिखता तो है, लोग गाड़ियां ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, बट इज इट इतना पैसा आता है कि क्या बेसिस पे कैसे होता है इसमें सिस्टम? सी ऑनेस्टली अगेन वही वाली बात है. अब जो कंटेंट क्रिएटर्स ने कर लिया, दे हैव मेड देयर मनी. नाउ अगेन इट इज़ अ sea full of fishes. It's gone back to basics. UGC content creators are on the rise. जो जिनके बन गए followers, अब उसमें 1000 भी ऐड करना इस मौत के बराबर, because it's that difficult Right. to grow on Instagram today. Algorithm is all over. But again, I feel जो मेरा prediction about content creation is that eventually the way it's going, it is again going to become a branded space where people will pay you for your face and for your this thing. अब वो ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक लाइक और ऑर्गेनिक फॉलोइंग वाला फेस खत्म हो चुका है. अब आप कोई भी कंटेंट को चाहो तो यू कैन बूस्ट इट टू 10 million also. So Correct. people are paying you for your face eventually. They're not So actually. it's become more like a modeling kind of a job. Yes, it's more like shooting ads. So you get an ad, you don't get an ad. So they can see your profile, it should look a certain way. And then of course there are these content creators who have really worked hard and who do organic content and funny content. But for again, I don't know how many brands go to them. Right. So there is a lot of category which you have to think and place yourself. So there is a strategy also that is Of followed. course. So with you, like, do you have someone who manages the brand collabs कि खुद ही आप deal करते हो? किस खुद ही तरह से करते होता हो. है? See, honestly, I do it myself. But I think that is why also I am doing a lot of work. Because you know, you again, like आपने कहा एक collaboration मिला, किसी महीने कुछ नहीं आता, किसी महीने बहुत कुछ आ जाता है. Correct. It is a matter of luck, chance, struggle. How responsive are you? How open are you? How budget friendly are you? Because there are some brands who don't have money genuinely, but you Right. think that they are good. Then you kind of, I tweak it. Where I know that I'm getting a brand which is a big brand, then I ask them for money. So you have to be very, बोलते हैं ना, थोड़ा स्मार्ट भी होना पड़ता है. Right. और सबसे अच्छी बात है कि there are emotions in it. तो ज़रूरी नहीं है कि सारे collaborations are only paid collaborations. कुछ I always pick and do which I feel कि नहीं, Which resonate with which you? which resonate with me. So that Right. freedom is there. It's not कि मेरा page completely paid है कि जिसमें मैं कुछ नहीं डाल सकती. Of course I take care of how it looks, but I have that freedom. Like if I have to do a podcast with you, I don't have to ask my manager कि you know Right. पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. You are my friend. I know you for so many years, and I would love to come and chat with you. Right. So you know that freedom is there, and I like Right. that. That is true. बंधना नहीं है कि बंधना नहीं बहुत है. लाइक ज्यादा- टीवी में Right. ऑफ कोर्स बंधन है, बहुत बड़ा प्रेशर है. TV में मतलब तो yes. मुझे याद है कि जब यू नो देयर वर टाइम्स कि मैं 9 दिन सोई नहीं हूँ. आई एम लाइक नॉट स्लेप्ट फॉर 9 days. मेरी शक्ल ऐसी दिख रही है कि अरे टेलीकास्ट में तो हम नहीं लिख सकते ना आपके कि सॉरी प्रणीता इज लुकिंग बैड और नेत्रा इज लुकिंग बैड बिकॉज शी हैज़ नॉट स्लेप्ट फॉर 9 days. Right. You need to look a certain way because television is not coming with subtitles of your personal life. Correct. Well, Instagram still can if you wish Yeah, to. if you cry and just put a story, this is not working out, that's I'm not putting, तो लोग believe भी कर लेते हैं. And you have your set of audience जो क्योंकि हम बहुत personal life expose भी करते हैं तो हाँ, उस and हिसाब that is से- also choice कि आपको कितना करना है कितना नहीं Correct. करना है. तो that Yeah. freedom and that control is what I like. It's like you're a producer on your own Correct. of your own life. Yeah. So, you know, जब ये आपने बोला कि you were on a break and everything, you know, आप जब conceive करते हो, you have a baby and all of it, you go through a lot of physical changes. But आप एकदम ही मतलब well maintained, एकदम sweet 16 type Gen Z एकदम maintain कर रखा है. So how have you like, you know, balanced your life that way?
सी फर्स्टली मैं मतलब आई हैड पुट ऑन 28 kgs हर्षिता व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट. वो अलग बात है, कोविड था तो बहुत से लोगों ने देखा नहीं, बट लिटरली 3 nighties और 4 सेम क्लोथ्स फॉर 1.5 years आई हैव worn. लाइक ऐसा होता था कि रिपीट पे, क्योंकि एक तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, कोविड है, कोई घर पे आ नहीं रहा मिलने के लिए. तो थैंकफुली इट वॉज अ ब्यूटिफुल टाइम, बिकॉज बोलते ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि कुछ नहीं था. मतलब मैं अपने उसमें ही जोन में थी. आई वॉज लिटरली जस्ट गिविंग माई 2000% टू माई चाइल्ड. फिर गोवा चले गए तो सारे दोस्त बॉम्बे रह गए. बट आई गिव माई सेल्फ 6 months जब तक मैं अनायशा को फीड करी थी. एक्चुअली पहले 3-4 months वर वेरी डिफिकल्ट. मुझे लगा कि दिस इज डाई वर्दी, वाई डिड आई डू दिस. एंड आई टेल अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, मदरहुड इज ब्यूटिफुल, सब बोलेंगे, बट हाउ क्रेजी इट इज एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज. One who goes through knows it. एंड आई थिंक ये वो वाली बात तो सच है कि यू नो जिसके साथ होता है चाहते दूसरे के साथ भी हो. लाइक तू भी आ जा बेटा, तुमको पता Sadist चलेगा. pleasures. Sadist pleasures. So yes, but those first few years are very difficult. I had put on a lot of weight and I gave myself time. 6 months के बाद I started, you know, dieting and starving. But I did. मतलब अगर कोई कहेगा कि अपने आप हो गया जी, मैं वर्कआउट कर रही थी, नहीं यार, मैंने लिटरली खाना पीने का त्याग किया है. एंड बहुत मेहनत करी है, ट्रीटमेंट्स भी करवाए हैं to be and look in a certain way that I do. I still don't look perfect because I'm like ठीक है, you know, we'll never be There's happy. It's a nothing like woman thing. perfect, of हम course. अपने आप को देखते हैं, हमें लगता है अरे ये फ्लैप निकल ही रहा है. I'm like oh God, अभी भी मुझे लग रहा है मेरे डबल चिन तो नहीं दिख रहा. बट यू नो अगेन यू हैव टू समवेयर एक्सेप्ट योर सेल्फ. देयर हैज टू बी अ बैलेंस. मुझे लगता है कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में अच्छी नहीं लगती. Right. ये नहीं कि अब मैं सर्जरी करा लूँ और ये भी नहीं कहूँगी कि मैं कुछ हेल्प ना लूँ. सो देयर वर सम थिंग्स दैट आई टुक हेल्प ऑफ. I tried some treatments. I starved myself. It was very difficult. Weight कम नहीं हो रहा था. And फिर धीरे धीरे करते, you know, family support, everyone motivating you. It happened. हो गया. हो गया. But 1.5 साल लगा to तो feel अभी normal. मेंटेन करने के लिए is there any regime that you follow? क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आ जाती है. यार मैं ना अभी तक मुझे लगता है like I've lost all that weight, but how my stomach used to look before being pregnant and after. That's a challenge that, you know, like it doesn't look the same. But yeah, I do work out now. I try and eat healthy. मैं intermittent fasting करती हूँ for sure. Like try करती हूँ कि जितना लेट हो सके तब खाऊँ and फिर थोड़ा sensible खाऊँ. Because अब क्या हो गया ना हर्षिता, after a person's age and stage in life ना, and after being a mom, you breathe and you can put on weight. या वो तो irrespective मेरा तो वही हाल है. तो जब नहीं तो पता नहीं तब क्या होगा फिर. I'm like खाना कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा वर्कआउट करना ही है. सो आई गो टू द जिम, आई डू पिलाटेस, आई ट्राई टू टेक आउट एटलीस्ट लाइक 4 to 5 times a week कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी करूँ, और कुछ नहीं करी तो खाना नहीं खाऊँ. सिंपल. तो जैसे अभी इंस्टाग्राम हो गया, टीवी हो गया, हाउ डिड द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग योर ओन ब्रांड कम? So I've always been very, very, you know, passionate about business and working, and my family background has also been political and business family. तो वो तो मेरे बनिया हूँ मैं, तो मेरे खून में business दौड़ता है. But और बहुत काम किया ही हुआ है. जब मतलब when I was acting also, I was helping my husband with his business. तो ऐसा नहीं है कि it was very alien to me, but yes, I did realize कि you know I cannot be doing television for a really long time. I might have to take a break. At the same time OTT के लिए भी again कितनी uncertain है हमारी industry. So I thought why not pick up a product which resonates with me. So मुझे लगता है काम जो मैं काम करना चाहती हूँ personally, it cannot be only money. It has to be money with something good. Yeah. Like कोई पर्पस करो तो कुछ एक, when you leave a legacy, we all are gonna die right eventually, but when I die at least कुछ तो ऐसा बनाया जो कुछ अच्छा भी था और अच्छी चीज़ बनाई which is adding some value to the society. So that has always been in my head forever, that I want to add value to my friends' life or people around me. I really believe कि एक अच्छा इंसान वो है जिसके आसपास के 4-5 लोग खुश हैं. अगर वो खुश हैं तो फिर सब कुछ सही है. एंड इफ यू क्रिएट अ ब्रांड और अ बिजनेस एंड इट कैन एक्चुअली हेल्प अ लार्जर
this thing where there is no personal emotional involvement, but you are able to solve a problem or do something Add good. value, Yeah, yeah. add value. I would love to do that. So that's why. सो अभी नाउ दैट यूर इनटू कंटेंट क्रिएशन, अभी आगे जाके डू यू इंटेंड कि आपको हम कोई टेलीविजन शो या ओटीटी या कहीं देखे? I'm really, really hopeful for that. Like I Okay. said, OTT, of course, and TV, maybe I'm looking at more like Cameo, thoda sa, so that I get some time off. But it's so good because television now again has become very limited series wala zone aa gaya hai Correct, TV mein. correct. So आजकल तो absolutely. वो वर्टिकल फॉर्मेट भी काफी चल रहा I है. in fact shot recently a pilot for Oh, wow. a vertical format short series. So I am looking at those things because मुझे हमेशा लगता है जो आपके हाथ का काम होता है ना वो कभी लाइफ में नहीं छोड़ना चाहिए. करेक्ट. आप और 50 बिजनेस कर लो पर ये मेरे हाथ का काम है. दिस इज समथिंग दैट केम टू मी विदाउट इन्वेस्टमेंट. बिजनेस में मैंने पैसे डाले, राइट. इसमें मैंने सिर्फ खुद को प्लेस किया था और Right. आई हैव मेड मनी. तो ये काम तो मैं टिल द टाइम मिल रहा है Yeah. मैं करती रहूंगी. आई विल नेवर स्टॉप और क्विट. देयर इज नथिंग लाइक क्विटिंग एक्टिंग. वाओ, सो आई रियली लुक फॉरवर्ड कि जल्दी कोई ओटीटी शो में हम अभी आपको देखे इंस्टाग्राम से बाहर होके, अभी जैसे हमने Exactly. पहले टीवी पे देखा था. एंड अब हम सीरियस बातें तो बहुत कर ली, सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रैपिड फायर. Yeah, that sounds really nice. सो लेट्स बिगिन द रैपिड फायर. Okay. फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश. Has to be Shah Rukh Khan. Co-star you would love to work again. Chaitanya and Vishal Singh. Last thing you googled. I think last thing I googled was the location. Yeah, I've been running around यहाँ से वहाँ. Instagram trend you secretly love. Oh, get ready with me. I secretly love it. And I'm like, सब कर रहे हैं, so boring. And I'm like, I wish I could. More photos in your phone, yours, baby or hubby. Of course, my daughter. Like it has to be. It's all her and me. Then husband though is Which not one? interested. Like मेरी photo मत खींचो. I saw that reel which was damn funny. Like sorry for making her rapid fire. See like wife clicking photos, husband's like no. वो एकदम और husband के साथ जाते हैं, husband clicking is like blur and wife is clicking very modern like photos. Yes, Yeah, absolutely. वो भी That's देखा my मैंने. husband. TV और Instagram, what's more stressful? TV. One parenting myth you think is total nonsense. Oh, that you have to be a good parent. How to be a good parent? It's a total nonsense. There's nothing like good parent. Please do not fall for that. All parents are good parents. कुछ नहीं करना होता extra. One brand you'd love to collaborate with. Oh my God, so many. That is, एक I ऐसा would. जो wish list के top पे है. Louis Vuitton. Acting, content creation, motherhood. Toughest role so far. Motherhood. Most used emoji in your chats. Emoji. Because I'm like other dead only. So I'm like yeah. One thing about being a mom that no one warned you about. Oh my God, that it's going to be a lot of mental work. Physical work तो सब like लोग कहते थे इतना काम करना पड़ता है. Physical work, it's you are never stress free. You live in fear. So I never had that emotion before, Anaisha. मेरे को डर नहीं लगता था. मुझे तो मेरे को किससे डर, मर जाएंगे मैक्सिमम. अब साइड लगता है मर जाएंगे मैक्सिमम सोच के भी लगता है oh there's a 5-year-old there who will take care of that person. So nobody told me that fear creeps in the moment you become a mom because Yeah. you're responsible for someone पहले else. जब हम छोटे थे तो लगता था मम्मी क्यों इतना वो करती है, but when you put yourself in those shoes and when that's when you realize. It's the toughest job. Like I'm telling you ना सब कुछ I can do this back to back like how I've done it in the past again all over again, but I can only struggle to be a good mom always, and I still have to keep myself like telling myself कि you don't have to prove anything to anyone. You're a parent. You're a good parent. That's it. कोई good bad नहीं होता. It's all good. Wow, ये तो fun हो गया आपका rapid fire. You were fast enough. जाते जाते anything you want to tell audiences or budding content creators or somebody who's just recently become a mom and motivate them. See, honestly, I want to tell all the moms out there, please do not judge yourself. Be very, very easy and calm. And don't listen to other people. Ki how to parent your child. It's fine. You will make 1,000 mistakes. It's absolutely fine. Do not succumb to that pressure. Because society का काम ही है वो pressure डालेगी आप पे. Do not succumb to it. And content creators, यार, chill out, ease out. You don't have to really go all out and start showing your life just to make it big. One thing that I'm hating about
Instagram now is nudity. So I really request everyone to stop this nonsense. There are a lot of these Right. big channels I've unfollowed recently Yeah. because of the nudity content. Like there is no spotting. The spotting culture of content creators is horrible, and I think it really needs to kind of stop. Like celebrities or actors have really worked hard, a lot of years they've given of their life to be spotted or to even pay for it. If they are, I would give it to them. But this is not the way that you just Right. take off your clothes and I'm on Instagram and I'm trending, and that is one thing that I want all to tell all the content creators. Please stop this. Just by showing your body, you might just get some numbers, but you don't get respect or value. So, yes, it was a wonderful conversation.